क्रॉप लगाता है, तो उस टाइम में प्रोटेक्शन सही से नहीं कर पाता है वो, जिसकी वजह से किसान इस मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी? किस तरह से लोगों को जागरूक करे, या किस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करे कि इस चीज़ पर भी थोड़ा-सा फोकस हो? देखिए, 2 तरीके की खेती इस समय हो रही है भारत में। एक तो कॉमर्शियल खेती है, जिसमें कि बड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है, जहाँ पे कि सारे जो आपके क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, जो भी रिकमेंडेड पैकेज है, उसके हिसाब से उसको खेती करते हैं। दूसरा जो सिस्टम है जिसको कि आप अभी बात कर रही हैं, ये सिस्टम जो है नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम, जहाँ पे कि एक साथ कई क्रॉप मिक्स फार्मिंग या इंटरक्रॉपिंग मिक्स फार्मिंग, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, इनके लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वैरायटीज अगर प्रयोग में लाई जा रही हैं, या किसानों के द्वारा ऐसी किस्मों का चयन करके बोया जाए जो कि पहले से रेजिस्टेंस है, टॉलरेंट हैं कुछ भी इस डिजीज या पेस्ट के लिए, तो ऐसी किस्मों के साथ इन चीज़ों की समस्या भी थोड़ी कम आती है। और क्योंकि वहाँ पे कई फसल लगी हुई हैं, तो वहाँ पे जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं या बेनिफिशियल और भी जो फंगस हैं, उनका भी धीरे धीरे क्या कहा जाए, मात्रा बढ़ती रहती है। और वे उसको, जो भी ऐसे इंसेक्ट आते हैं, उनको ईटीएल तक पहुंचने में समय ज़्यादा लग जाता है, तो फसल तैयार हो जाती है और उसमें इफेक्ट कम आता है। एक ही किस्म लगी है बड़े क्षेत्र में, तो अगर उसमें कोई डिजीज आती है तो वो पूरी पूरी फसल एक बार में इफेक्ट हो जाती है। जबकि अगर कई फसलें लगी हुई हैं, तो उसमें ये जो किस्म के अलग अलग किस्म के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस या होंगे, तो उसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ती है डिजीज या पेस्ट, तो ये वहाँ पे इस तरह से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सर, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, उससे हेल्थ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है ना, चाहे हम एक फसल की बात करें या हम मल्टीपल फसल की बात करें एक ही खेत में। तो उससे भी किस तरह से उस इफ़ेक्ट को हम कैसे रोकेंगे? देखिए, हेल्थ के ऊपर, किसके हेल्थ के ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग? सॉइल के हेल्थ की भी बात हो रही है और ह्यूमन बीइंग की भी बात हो अगर रही है। देखा जाए ना, अगर हमारा शरीर बीमारी आती है, हमारे अंदर भी अगर कोई बीमारी आ जाए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? मेडिसिन एक तो हम इंतजार करें कि नेचुरल तरीके से हम ठीक हो जाएं। दूसरा है कि कुछ उसमें हम दवाई लेना शुरू करें, जो घरेलू नुस्खे हैं उसको पहले कर लें। फिर उसके बाद नहीं तो फिर एलोपैथी दवा लेके आए। अगर नहीं होगा, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, तो फिर तो काट के निकालना ही उसका बीमारी है। तो सर्जरी इज द लास्ट। तो वो भी सेम तरीका, अगर पौधे में कोई बीमारी आती है, तो पहले कोशिश होती है कि वो नेचुरल एनिमीज जो हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के, उसकी वजह से वो ठीक हो सकता है तो हो जाए। लेकिन जब वो ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर आने लगती है, तो उसमें कंट्रोल मस्ट है। तो चाहे वो एग्रोकेमिकल से करें या एनी अदर बायो सॉल्यूशन हो, या जो भी इफेक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए, दैट इज द थिंग। वहाँ पे फिर ये नहीं देखना है कि फसल चली जाए किसान की तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। और बाकी एमआरएल्स का जो इशू है, एमआरएल तभी आता है जब गलत तरीके से या बहुत ज़्यादा प्रयोग किसी इंसेक्टिसाइड का होने लगता है। अदरवाइज एमआरएल अगर समय से डाले जाएं और फसल हार्वेस्ट से कुछ उसका जो टाइम है उसके पहले डाले जाएं, तो कोई समस्या उसमें नहीं। That would come to mind when you would think of the agrochemical industry. I would like us today to reflect a little bit on our role to help this nation become developed by 2047. I think we're caught up still in a lot of noise that keeps us from realizing that to make this dream come true, this industry has a very important role to play. I've been quoted lately saying that India will not become a developed nation in 23 years with a backward agriculture. And it is us that have been advancing agriculture together with Indian research associations, with the Indian government, and I fundamentally believe this is the time to accelerate. But what does it mean?
We need to ensure that Indian farmers have Very good morning, sir. This is 12th Crop Protection Summit, and congratulations to you. And tell me your experience and tell me your future plan about the crop protection. Thank you. Thank you very much for asking me. I mean, crop protection is so important in our environment, Yeah. right? I mean, we're 1.4 billion people, and what I like to say is we're calorie sufficient. But as a country, we still have a lot to do to make nutritious food available for everybody. And crop protection in this industry is essential to make that possible, especially when we put it into the context of saying we want to be a developed nation by 2047. Sir, what about the crop diversification situations? How we can protect that type of crops in crop diversification? Right. I mean, the interesting thing is India is actually one of the most diverse, if not Yeah. the most diverse country in the world, right? Yeah. Moving away from our industry, when you look at the seed industry, I would say India is the most vibrant seed industry Exactly. anywhere in the world, Yes. right? So I think what we need to make sure is that we approach discussions from a sense of what is best for the country and not be fearful. Given the size of the country, given the agricultural land, the risk of us becoming, may I say so, Brazil, in the sense of just having one or two crops is almost non-existent, right? Still, in many ways, when people think about agriculture in India, we sometimes also only think about two crops, which is rice and wheat, because we think about one state or two states, right? That's not India. India is the most diverse country in the world in terms of how we produce our food. I think we have a lot to do to ask ourselves, do we produce the right crops, the right food, the right space? So there is a discussion on diversification into other crops. And we see this right now happening specifically with maize, which is becoming a more and more important Yes. crop as well. Thank you very much. Thank you. Thank you.